Hello dear student, myself is Roshni Parikh and today's topic of discussion is few MCQ based on the unit number 2 of the transmission and distribution of electrical power for practice session. Now, what is the title of unit number 2? So, title of unit number 2, that is the performance of transmission line. Now, all the theories are briefly explained while the lecture session. Now, today I am coming with few MCQ based on the unit number 2 for the practice purpose, which will be helpful in your GTU examination. Now, first MCQ. Which of the following are the constants of the transmission line? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से ट्रांसमिशन लाइंस के कॉन्स्टेंट्स है? तो ए दैट इज द इंडक्टेंस, बी दैट इज द कैपेसिटेंस, सी दैट इज द रेजिस्टेंस, डी दैट इज द कंडक्टेंस and E that is the all of the above. Now as we studied that the inductance, capacitance, resistance and conductance all are the constants of the transmission line. So here a correct option that is the E all of the above. So answer that is the E that is the correct answer all of the above. Now next question. The phenomenon of rising in voltage at receiving end of the open circuited or a lightly loaded line is called as. जब ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किटेड मीन्स जब नो लोड होता है और लाइटली लोडेड होती है तब रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू सेंडिंग एंड, तो वो फिनोमिनोन को हम क्या कहते हैं, कौन सी इफेक्ट कहते हैं? तो ऑप्शन ए दैट इज द रोमन इफेक्ट, B that is the skin effect, C that is the corona effect and D that is the Ferranti effect. So answer that is the D Ferranti effect. Why the Ferranti effect? So in a theory we have already studied that okay, when the transmission line is lightly loaded or you can say open circuited at that time due to the capacitance of the line, due to the capacitance of the line, your receiving end voltage is always greater than the your sending end voltage due to the distributed capacitance all over the line. So correct answer that is the D Ferranti effect. It is due to the charging of the distributed capacitance of the line. Now third question is the power factor of industrial load is generally, इंडस्ट्री में जितने भी लोड है उसका पावर फैक्टर कौन सा रहता है? यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग और एनी ऑफ द अबो. So we know that in a industrial most of the load that is the RL type load. So in a RL type load power factor is always be a lagging, means your current is lags behind the voltage. So here a correct answer that is the B lagging. Now कोरोना डिस्चार्ज अकर्स मोर इन, कोरोना डिस्चार्ज कब ज़्यादा होता है, कौन से एटमोसफियर में ज़्यादा रहता है? ह्यूमिड वेदर, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर और एनी ऑफ द अबो. नाउ एज पर द कोरोना इफेक्ट थियरी वी नो दैट in a humid weather so many water droplets are there and due to the water droplets your electric charging or you can say electrostatic stress are increased while in the atmosphere. So in a humid weather, यहाँ humid weather में कोरोना डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज दी ए ड्यू टू दी वाटर ड्रॉपलेट्स. Now fifth, skin effect is proportional to, skin effect directly proportional किससे है? तो directly proportional to diameter of conductor, directly proportional to the root of diameter of conductor, inversely proportional to the root of diameter of conductor, directly proportional to diameter of conductor square and inversely proportional to diameter of conductor square. So as per the skin effect theory we know that skin depth is inversely proportional to the frequency. So here a skin effect is directly proportional to the diameter of conductor square. So correct option that is the C. Now next, the skin effect cause, skin effect में क्या होता है? तो the portion of the we know that in a skin effect
कंडक्टर का जो भी डायमीटर रहता है तो उसके सरफेस एरिया में ज्यादा करंट कैरी होता है कंपेयर टू द कोर मीन सेंटर ऑफ द कंडक्टर. So here a correct answer, that is the portion of the conductor near the surface carries the more current and the core means the center of the conductor carries the less current. So correct option, that is the B. It is called a skin effect. Now next question. Skin effect depends upon option A, frequency of the current, B, resistivity of conductor material, C, size of the conductor, D, type of conductor, E, all of the above. So we know that the skin effect depends on the frequency of the current, resistivity of conductor material, size of the conductor, types of the conductor. So all above are the correct for the skin effect. So here a correct answer, that is the E. Correct option, that is the E, all of the above. Now next, Faraday effect can be reduced by which of the following method? First, that is the by using the shunt reactor, B, series reactor, C, that is the shunt capacitor, D, that is the shunt series capacitor. So here correct Faraday effect, as I said that the receiving end voltage is higher than the sending end voltage when the transmission line is on no load or lightly loaded. Now Faraday effect is only because of the charging current of the capacitance of the line. This effect is because of the charging current of the capacitance, distributed capacitance of the line. So this will be compensated by using the shunt reactor. We can compensate Faraday effect. हम Faraday effect को कम कर सकते हैं शंट रिएक्टर को यूज करके. शंट रिएक्टर क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा ये इफेक्ट को. सो शंट रिएक्टर, that is the correct option. So A, that is the correct option, shunt reactor. Now proximity effect is more in case of, proximity effect किसमें ज्यादा रहती है, तो हमें पता है कि proximity effect में दो कंडक्टर नेबरिंग कंडक्टर से होता है. तो इन अ ओवरहेड लाइन का करेक्ट ऑप्शन, that is see here so many options are there. A, that is the overhead line, B, that is the power cable, C, that is the DC transmission and D, that is the none of the above. So proximity effect किसमें ज्यादा रहती है, तो देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन केबल्स के बीच का अंतर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है. वेर एवर इन अ पावर केबल द डिस्टेंस कम रहता है. तो जहाँ पे डिस्टेंस कम रहता है नेबरिंग कंडक्टर की इफेक्ट ज़्यादा रहती है. सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा रहती है. सो पावर केबल, दैट इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द बी, पावर केबल. Now if the frequency is increased then the skin effect will, as I said that skin effect means the depth of the skin, depth of the conductor is inversely proportional to the frequency. So frequency ज़्यादा होती है तो depth reduced होता है and skin effect ज़्यादा होती है. So if the frequency is increased, if the frequency is increased then the skin effect will increase. Here a correct option, that is the C, increase. Now next, the distribution constant of the transmission line is, इसमें से ट्रांसमिशन लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट्स कौन से है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड डी, दैट इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. as I said that all the resistance, inductance, capacitance and conductance are the distribution constants of the transmission line. So correct option, that is the D. Now next, in which of the following transmission lines capacitance effect is negligible? So we know that as per the classification, three types of transmission line is there: uh, long transmission line, short transmission line, and medium transmission line. Now in a short transmission line, we can neglect the shunt capacitance. So short transmission line, that is the correct option. B, that is the B, that is the correct option, short transmission line. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट करते हैं because the charging current drawn by the capacitance, that is the negligible. So we neglect the effect of the capacitance and conductance too. Now next, the fact that current density is higher at the surface when compared to the center is known as. Current density means के current flowing
is higher at the surface when compared to the center. कंडक्टर में सेंटर से ज़्यादा सरफेस पे करंट डेंसिटी ज़्यादा रहती है, मीन्स करंट सरफेस में से फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमें पता है उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं. तो ए दैट इज द स्किन इफेक्ट, बी दैट इज द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, सी दैट इज द कोरोना इफेक्ट, डी दैट इज द नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज द ए स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट में सेंटर से कंडक्टर कोर जो होता है, तो कोर के सेंटर का सेंटर होता है उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो नहीं होता. स्किन इफेक्ट में उसके सरफेस एरिया से करंट फ्लो होता है, मीन्स करंट डेंसिटी इज हायर एट द सरफेस एरिया कंपेयर टू द सेंटर. नाउ नेक्स्ट, the effective resistance of a conductor will be the same as the ohmic resistance when. अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी द सेम एज दी एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन. कंडक्टर जो होता है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका ओमिक रेजिस्टेंस जितना ही रहता है. कब? जब करंट होता है वो पूरे डायमीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर करता है तभी. तो यहाँ पे देखो, करंट इज इन ट्रू साइन वेव फॉर्म, बी वोल्टेज इज अ लो, power factor is a unity, and third option that is the current is uniformly distributed in the conductor cross section, means कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में से जब करंट यूनिफॉर्मली जाता है तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो ओमिक रेजिस्टेंस के जितना ही रहता है. तो हियर अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज द डी. नाउ नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, जब भी कोरोना इफेक्ट होती है तो क्या होता है, वी नो डेट के ना कोरोना एनर्जी लॉसेस आर इंक्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज द ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस. नाउ 16, कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय. कोरोना इफेक्ट हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? फर्स्ट, हिसिंग साउंड, बी faint luminous flow of bluish color, or you can say purple color, C that is the presence of ozone detected by odor, and D all of the above. So here a correct option that is the D. जब कोरोना इफेक्ट होती है तब hissing sound, then luminous glow around the conductor and around the core, then presence of the ozone, some odor are there. So we can detect it by all of these features. Now next, the bundling of conductor is done preliminary to, हम कंडक्टर का बंडलिंग क्यों करते हैं? तो एज वी नो दैट बंडलिंग इज डन फॉर द रिड्यूस द रिएक्टेंस. सो हियर अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज द रिड्यूस रिएक्टेंस. brief theory is already discussed into the lecture. Now corona usually occur when the electrostatic stress in the air around the conductor succeed. We know that that is the 30 kV maximum value per centimeter. So option that is the A. Why? During the corona effect. Now in overhead transmission line, the effect of capacitance can be neglected when the length of line less than. So as I discussed that in a short transmission line, the effect of capacitance can be neglected. So short transmission line means when the line is less than 80 kilometer, less than or equal to 80 kilometer. So here a correct option that is the D, 80 kilometer. In a short transmission line we can neglect the capacitance. Now next, the network in which the RLC parameter are individually concentrated or lumped at a discrete point in the circuit are called. जब हम RLC पैरामीटर को कोई एक इंडिविजुअल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लम्प्ड पैरामीटर कहते हैं. तो लम्प दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, which is into the medium transmission line. So and in a long transmission line distributed parameters are there. So here a correct option that is the A. Hope you understood. If you have any query then you can ask me anytime. Thank you so much.